ये नांदी बोला जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो बीईडी रो सेकेंड वीडियो को समस्त वेलकम। जदि आम देखा ऑलरेडी आम फास्ट वीडियो रे डिस्कशन करथिले जोटा कि आम मैराथन सेशन थिला एंड मैराथन सेशन रे आम सेल चैप्टर हो एंड आल्सो दैट इज आमर डाइजेशन चैप्टर हो एंड एक्सक्रीशन चैप्टर हो एंड आल्सो इकोलॉजी चैप्टर हो ये सब डिस्कशन करथिले एंड टुडे द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज बायोलॉजी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस जोटा कि तुम एग्जाम पे बहुत हेल्प हो। तो आम स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल फॉलो। जदि आम देखा क्वेश्चन अच्छी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेवल इन ट्रॉपिक लेवल फॉलोज 15% लॉ 5% लॉ 10% लॉ 20% लॉ। ओके तो रश्मिता यस आंसर होची 10% लॉ। आज यू नो दैट 10% लॉ किए कहते दैट इज लिंडेमैन एंड लिंडेमैन को जो 10% लॉ थिला दैट इज ईच ट्रॉपिक लेवल रे एनर्जीटा 10% आकार जीव। फॉर एग्जांपल जदि तुमको क्वेश्चन पचारेबो धर सपोज प्रोड्यूसर लेवल रे एनर्जी अच्छी प्रोड्यूसर लेवल रे एनर्जी अच्छी 1000 जूल एंड सपोज प्राइमरी कंज्यूमर रे केते हबो सेकेंडरी कंज्यूमर रे केते हबो एंड टर्शियरी कंज्यूमर रे केते हबो। यदि क्वेश्चन पचारला कि प्रोड्यूसर लेवल रे इफ द एनर्जी इन प्रोड्यूसर लेवल इज 1000 जूल then what is the energy level in primary consumer secondary consumer and tertiary consumer कौन अब आंसर। yes good morning आर पृष्टि प्रणाम। तो जदि तुमको प्रोड्यूसर लेवल रे एनर्जी देला 1000 जूल ताहले प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर रे एनर्जी रो लेवल कोन हो। तो आज यू नो दैट 10% लॉ जीवो तो नियत रूपे प्राइमरी रे गोटे शून काटी दबो काहे ना 1000 रो 10% सो 1000 * 10/100 तो 100 जूल एंड सेकेंडरी कंज्यूमर रे 10 जूल एंड टर्शियरी कंज्यूमर रे दैट इज 1 जूल। क्लियर 10 * 10/100 1 जूल। तो ये हूँ तुम एनर्जी लेवल को नहीं क्वेश्चन पचारि पार तो निहत रूप से टर्शियरी कंज्यूमर 1 जूल परफेक्ट मानश्री यस सेम यही नीट रे क्वेश्चन पचार यही वर्ष जो आम री नीट होता मेडिकल टेस्ट होता से गोटे क्वेश्चन थिला एई भलिया कि सपोज दिस वन T4 and T3 T2 and T1 and here that is 1 2 3 ताहले T1 रे केते जूल हबो if the energy in T4 equal to 100 जूल जदि सपोज 100 जूल हला ताले T1 रे केते हबो कोन अब आंसर। जदि T4 रे एनर्जी लेवल 100 जूल ताले T1 रे केते हबो। यस प्रणाम what will be your answer here if the energy in T4 is 100 जूल ताहले T1 रे केते हबो। यस ताले गोटे गोटे बढ़ई बढ़ई जीवो ऑब्वियसली दैट इज 100 हेले एटी 1000 जूल एंड एठी आ गोटे शून बसेबो देन एठी ओके तो ये होची टोटल जूल। क्लियर जदि आम ट्रॉपिक लेवल रो ऊपर ऊपर को जीवा बा प्रोड्यूसर रो प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर जिया गोटे गोटे शून माइनस करी जीवो एंड जदि T4 रो T1 बा ट्रॉपिक लेवल रो अपर टू लोअर आसीबो ताहले 0 ऐड करी आसीबो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एंड मन रखिबो 10% लॉ डिस्कवर करथिले द साइंटिस्ट लिंडेमैन। नेक्स्ट चलो a graphical representation known as dash is required to express food or energy relationship between organism at different trophic level ecological pyramid ecological quadrilateral standing state ना standing crop कौन हबो आंसर दियो। a graphical representation known as dash is required to go I think it is a easy question yes आंसर कौन हम दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड मोस्ट इंपोर्टेंट इकोलॉजिकल पिरामिड। तापर मत को व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट एंड एटा भी गोटे जदि कहया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे जीवो स्टैंडिंग स्टेट कौन व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट कौन अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन इकोसिस्टम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस सल्फर ये सब इन एन इको
system. Amount of inorganic nutrient in an ecosystem is called as standing state. Most important, amount of inorganic nutrient in an ecosystem is called as standing state. Then next question, standing crop कोण गोटे इकोसिस्टम रे जति की इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देखा जाए ताको स्टैंडिंग स्टेट कहा जाए. देन को की स्टैंडिंग क्रॉप कोण, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? टोटल बायोमास present in an ecosystem at a particular time. Strictly मन रखिबो बायोमास हेले स्टैंडिंग क्रॉप. एठी तमे की पॉइंट हिसाब रे मन रखि परिबो. जदि बायोमास विषय रे देछि ताहले स्टैंडिंग क्रॉप, एंड जदि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विषय रे देछि ताहले स्टैंडिंग स्टेट. So these 2 points are most important. If examiner will ask you standing crop, then you have to see if the biomass is there, by amount of biomass present in an ecosystem or present in a trophic level at the particular time is called as standing crop, and standing state होजे amount of inorganic nutrient. Total biomass of ecosystem are पुष्टि perfect. So ए दुटा भी मन रखिबा. एंड इकोलॉजिकल पिरामिड हमें जानि. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. Ecological pyramid are based on food chain, energy flow, food web, na all of this. कौन हबो? Ecological pyramid are based on food chain, energy flow, food web, all of this. Yes, हमें जानी छे ecological pyramid are based on both food chain and energy flow, food web, all of this. Clear? काली हमें डिस्कशन करथिले. एठी गोटे क्वेश्चन तुम पचारिबी. व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? Biomagnification कौन? What is biomagnification? Who can say? What is biomagnification? Biomagnification कौन? What is biomagnification? Manasri, R. Prushti, Ruchismita, Rajalakshmi. What is biomagnification? Biomagnification कौन? As you know that is increase of toxic substance like mercury, and the symbol of mercury is Hg. mercury and DDT, mercury और DDT रो ट्रॉपिक लेवल रे जो इंक्रीज हे जिबा बा इंक्रीज द टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक mercury and DDT in trophic level is called as biomagnification. You have to remember biomagnification most important. Perfect. Yes. Then what is eutrophication? What is eutrophication? Eutrophication कौन? What is eutrophication? Anyone? Eutrophication कौन? Yes, toxin present in trophic level but increase the toxic substance in a trophic level. Perfect. What is eutrophication? Who can say? Eutrophication, that is natural aging of lake. You have to remember eutrophication, natural aging of lake. Natural aging natural aging of lake. Clear? Next चलो. Primary succession occurs in primary succession कोठी हुए? Primary succession occurs in natural aging of lake. Perfect. Primary succession occurs in को कौन हबो? प्राइमरी सक्सेशन कोठी हबो? माने सक्सेशन माने गोटे जगह रे कोनोसी स्पीसीज नथिबे बा प्लांट स्पीसीज नथिबे कि एनिमल स्पीसीज नथिबे. जेमति के बेयर रॉक हो, बेयर रॉक रे कोनोसी किछि स्पीसीज नथिबे. आस्ते स्पीसीज रो डेवलपमेंट हबो. ओवर ए टाइम पीरियड स्पीसीज ता इंक्रीज हे जिवो बा दैट इज आस्ते छोट छोट लाइचेन हबो. लाइचेन पर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, प्लांट हबो, एनिमल हबो. तो दैट इज बेयर रॉक रे हुए. प्राइमरी सक्सेशन टू टाइप्स रो. गोटे प्राइमरी सक्सेशन एंड अनदर वन इज सेकेंडरी सक्सेशन. यू हैव टू रिमेंबर प्राइमरी सक्सेशन टा कोठी हबो जोठी कोनोसी जीव जगत नथिबे बा कोनोसी टाइप रो प्लांट एंड एनिमल प्रीवियसली नथिबे.
then that is first time by plant and animal species ର growth habo primary succession जोटा कि bare rock रे परिबो newly created pond बा जो pond को newly created हेतबो सेतरे हे परिबो newly cooled lava तो सेतरे भी हे परिबो तो all of these option all of these then जदि तुम पचरा जीवो that is secondary succession कोड हुए who can say secondary succession occurs in secondary succession कोड हुए actually secondary succession कोड हेबो जोठी previously कोनोसी species रहुतिबे and से जगहटा फॉर एग्जांपल जेमति कि कल्टीवेटेड लैंड हो जदि कोनोसी लैंड अछि एंड मनुष्य से लैंड को पूरा काटी की नष्ट कर देछि बा जंगल अछि जंगल रे निया लागि जाइछि तो जो जगह रे प्रीवियसली लाइफ थिबो एंड मनुष्यर काम पाई बा हम मानकर ह्यूमन बीइंग्स रा एक्टिविटी कारण से जगह रे कोनोसी जीव जगत रा डिस्ट्रॉय हो जाइतिबे तो दैट इज प्रीवियसली लाइफ थिबे एंड अगेन जदि लाइफ सेटो होउसी दैट इज विजयलक्ष्मी प्रणाम ताहाले ताकू कहै जे सेकेंडरी सक्सेशन क्लियर तो क्वेश्चन पचारे प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन ए दिना भितर कोडा फास्ट व्हिच सक्सेशन इज फास्ट प्राइमरी और सेकेंडरी हु कैन से among the primary and the secondary succession को सक्सेशन टा that is fast way primary and secondary भितर fast succession कोथि हुए yes no that is succession fast way secondary रे because सेठी already life थिबो so that secondary succession रे life that is fast way then secondary succession occurs in bond forest flooded land ना abundant farmland तो देखो सही क्वेश्चन पचाला सेकेंडरी सक्सेशन टा कोठी हुए जोठी आगुरो लाइफ थिबो जेमति कि बॉन्ड फॉरेस्ट रे आगुरो लाइफ थिबो एंड कोन से कॉज रु फॉरेस्ट रे निया लागि छि से जगह रहबो दैट इज जदि हमें फ्लोडेड लैंड बा पानी द्वारा जदि लैंड ए छि देन अबंडेंट फार्म लैंड तो ऑल ऑफ दिस ऑलरेडी से जगह रे लाइफ थिबो तो कोन से कॉज जगु जदि से लाइफ टा डिस्ट्रॉय हो जाइछि तो अगेन सेकेंडरी सक्सेशन होबा को सेकेंडरी सक्सेशन को जाय एंड यू हैव टू रिमेंबर सेकेंडरी सक्सेशन टा फास्ट वे देन द प्राइमरी सक्सेशन ता पूर्व छोट अनाउंसमेंट अछि साइंस आर्ट्स में जो माने मॉक टेस्ट एनरोल करियो चाहो छ तो 10टा मॉक टेस्ट पई तुमको मात्र 169 टका पड़िबो एंड ए नंबर को कांटेक्ट करिवि तमे मॉक टेस्ट एनरोल करि परबो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हाउ इज प्राइमरी सक्सेशन डिफर्स फ्रॉम द सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन टा सेकेंडरी सक्सेशन थारु डिफर केमती कोन बको हाउ द प्राइमरी सक्सेशन इज डिफर्स फ्रॉम द सेकेंडरी सक्सेशन okay the first option dela there is a change in type of animal and plant during the primary succession occurs yes then anthropogenic disturbance can change serial stage of the primary succession only primary succession occurs at a slow rate now all of the above it is all of the above next what happened during the succession re kon hue extinction of species na increase the number of some species ना चेंज इन टाइप ऑफ डिकम्पोजर स्पीशीज ना ऑल ऑफ दिस सक्सेशन रे कोन हुए ऑब्वियसली सक्सेशन रे हम जे देखिबा विजयलक्ष्मी एंड सबु ऑल रश्मि प्रभा ऑल दैट इज सक्सेशन रे हम जे देखिबा एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हबो एंड आल्सो चेंज इन टाइप ऑफ डिकम्पोजर हबो इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज हबो ऑल ऑफ दिस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो in secondary succession the species that invades an area depend upon सेकेंडरी सक्सेशन टा स्टार्ट होबा पे कहा ऊपर डिपेंड करिवो दैट इज सॉइल कंडीशन ऊपर डिपेंड करिवो सीड और दैट इज प्रोपेगल्स प्रेजेंट ना वाटर अवेलेबिलिटी ना ऑल कोन इजी क्वेश्चन यार इकोलॉजी रो तमरो मैक्सिमम वेटेज आसी तमरो बीड रे जदि तमे क्वेश्चन देखिवो तो इकोलॉजी रो भलो क्वेश्चन आसी इकोलॉजी सेल तो इथरु तमरो क्वेश्चन भलो आसीबो तो निहात ऊपर ए सब जिंस गुडा टिके प्रैक्टिस करता इकोलॉजी रो जदि पारुच मु तुम गोटे छोट सजेशन देबी जदि इकोलॉजी तुम पढ़िया अछि एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी रो लास्ट जो चारटा चैप्टर रहला ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम एनवायरमेंटल इशू एंड ई जो चैप्टर गुडा रहला ताको भलो से पढ़ो एनसीईआरटी रो ही पढ़ो एंड दैट इज एनफ तो आंसर कोन होबो सेकेंडरी सक्सेशन ऑफ द स्पीशीज दैट इन्वेड्स इन एन एरिया डिपेंड अपॉन द सॉइल कंडीशन सीड एंड प्रोपेगल्स प्रेजेंट water availability all of these clear next question number of control steps required in glycolysis रे केतेटा steps number of control steps required in glycolysis रे total केतेटा steps को 1 5 10 15
10. Yes, right. आम जो देखा ग्लाइकोलिसिस रे 10टा स्टेप मते कहो कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, हु कैन से व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस कौन? दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लिसिस माने होची स्प्लिटिंग एंड ग्लाइकोलिसिस माने दैट इज ग्लूकोज रो स्प्लिटिंग. The glycolysis is a process in which the splitting of glucose takes place. Glucose ta splitting is converted over two molecules of pyruvic acid. This is the most important. What is glycolysis? Breakdown of a glucose. That means when the glucose get breakdown to converted of pyruvic acid, that is called as glycolysis. ओके. अच्छा तापर मते कहो कि ग्लाइकोलिसिस रे टोटल 10टा स्टेप मन रखिबो. एंड ग्लाइकोलिसिस को अदरवाइज को पाथवे को जाए? ऑप्शन दोजी ECP pathway, EMP pathway, na PCB pathway. Glycolysis is otherwise called as ECP pathway, EMP pathway, PCB pathway. Yes, right. That is EMP pathway. E for Emden, M for Meyerhoff, P for Parnos. According to the three scientists, the glycolysis is otherwise called as EMP pathway. Then mate ko that is glycolysis occurs in cytoplasm. That is ଆମର next होची mitochondria ना both. Glycolysis कोठ हुए? cytoplasm, mitochondria ना both? Yes, obviously glycolysis occurs in cytoplasm. And यदि next question पचरे glycolysis occurs in only prokaryotic ना eukaryotic ना both? Glycolysis prokaryotic cell रे हुए, eukaryotic cells हुए ना both रे हुए? कौन आंसर? Yes, Rashmi Prabha, perfect. That is Krebs cycles occurs in matrix of mitochondria. Yes, both. Glycolysis is a universal pathway. Glycolysis गोटे यूनिवर्सल पाथवे जोटा कि एरोबिक रे हबो, एनारोबिक रे हबो, प्रोकैरियोटिक रे हबो, यूकैरियोटिक रे हबो, साइटोप्लाज्म रो 10टा स्टेप. तापर मते कुओ दैट इज को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज्ड हुए? ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज हबो? ऑप्शन दोची ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज रु फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट ना 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. को स्टेप रे बेसिकली हमरो एटीपी यूटिलाइज्ड हबो? तीनटा ऑप्शन देली. दैट इज को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज हबो को? यस, परफेक्ट. मन रखिबो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट and fructose to fructose 1,6 phosphate. This is the two steps in which the ATP will utilize in glycolysis. And मते को कि को स्टेप रे ATP रिलीज हबो? ATP रिलीज हबो को स्टेप रे? ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे ATP रिलीज हबो? हु कैन से को स्टेप रो ग्लाइकोलिसिस रे ATP रिलीज हबो? वन थ्री 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड and phosphoenol pyruvate to pyruvic acid. এই দুইটা স্টেপ রে दैट इज एटीपीटा हमरो PGA फॉर्म रे BPGA to PGA. Yes, that is 1,3 phosphoglyceric acid to phosphoglyceric acid. Then another one is that is phosphoenol pyruvate to pyruvic acid. You have to remember these 2 points in which the ATP will utilize and in which step the ATP will synthesized. तो मन रखियो. एंड ग्लाइकोलिसिस कंप्लीटली 10टा स्टेप अछि एंड 10टा स्टेप रे को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज, को स्टेप रे एटीपी फॉर्मेशन होछि. ओके नेक्स्ट चलो. अच्छा एठी आ गोटे क्वेश्चन पचारिया. क्रेब साइकिल अकर्स इन, क्रेब साइकिल कोठी हुए? दैट इज
Krebs cycles occurs in matrix of mitochondria, na inner membrane of mitochondria, na cytoplasm. In which cell organelle Krebs cycle will occur? Obviously, you have to remember the most important Krebs cycle according to the scientist name Hans Krebs. So that according to the name of the scientist, it is called as Krebs cycle, and strictly Krebs cycles occur in matrix of mitochondria. Achha, suppose this is the structure of mitochondria, and the infoldings of inner membrane of mitochondria is called what is the name of the structure which is formed by the infoldings of mitochondria? That is mitochondrial inner membrane ର infoldings କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? Yes, right, cristae. Perfect. The matrix of mitochondria, କୋଉଟା? The space inside the inner membrane or the space between the outer membrane and inner membrane? Which space is called as the matrix of mitochondria? The space inside the inner membrane or the space between the outer membrane and inner membrane? Who can say? Hans Krebs. Yes, right. Yes, Orpita, perfect. The space inside the inner membrane of mitochondria is called as that is matrix of mitochondria, and in the matrix of mitochondria the Krebs cycle will occur. Perfect. Okay. Then what you electron transport chain is otherwise called as oxidative phosphorylation, na oxidative decarboxylation. Who can say? देखो writing मु speed लिखुची so that नमे मो कथा को relate करो. Oxidative phosphorylation, oxidative decarboxylation. Electron transport chain is otherwise called as, yes, Subhalakshmi, oxidative phosphorylation. You have to remember oxidative phosphorylation or electron transport chain by ETC is occurred in inner membrane of mitochondria. What is the name of the complex one? Electron transport chain ro complex one ro na kono? NADH dehydrogenase, na succinate dehydrogenase. What is the name of complex one? Complex one ro name kono? आमे जे जानि छे electron transport chain रे complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and option 1 NADH dehydrogenase. मन रखिबो. तो complex 1 होची NADH dehydrogenase and complex 2 होची हमर succinate dehydrogenase. तो मन रखिबो ना दीदी साकी दीदी, ना दीदी साकी दीदी साइटो मतलब ना दीदी होची कॉम्प्लेक्स 1 होची NADH dehydrogenase, साकी दीदी होची succinate dehydrogenase complex number 2, cytochrome BC1 and AA3. ठीक अछि, मन रखियो कॉम्प्लेक्स 1 कोन, कॉम्प्लेक्स 2 कोन, कॉम्प्लेक्स 3 कोन, कॉम्प्लेक्स 4 कोन. चलो नेक्स्ट जीवा. In plant the end product of photosynthesis is plant रे end product of photosynthesis को in plant the end product of photosynthesis is that is glucose C6H12O6. मते कुआ कि in animal cell glucose will store in the form of starch or glycogen. Who can say? In animal cell the glucose will store in the form of animal cell रे glucose टा को form रे store होबो, that is glycogen. Perfect. In plant cell glucose will store in the form of starch. Animal cell रे glycogen form रे, plant cell रे starch form रे. Clear? Most abundant protein कहा को कहा जाए? Most abundant protein in animal world and most abundant protein in biosphere. Dita question.
Most abundant protein animal world रे and most abundant protein biosphere रे who can say most abundant protein in animal world and most abundant protein in biosphere? Most abundant protein in animal world and biosphere रहुची RUBP, sorry Rubisco, and most abundant होची animal world रे glycogen. ठीक अच्छे है तो भाव कि बायोस्फीयर टा बड़ वर्ड so that RUBP and glycogen animal world छोट छोट वर्ड दीटा को तो क्लियर है तो एमती मन रखिबो कि दैट इज बायोस्फीयर टा होची हमर सॉरी हां बायोस्फीयर टा बड़ ना सो रूबिस को क्लियर है चलो बायोस्फीयर रूबिस को नेक्स्ट चलो the enzyme which converts the sucrose to glucose and fructose called as को enzyme basically sucrose को convert करिवो glucose and fructose को which enzyme is responsible to convert the sucrose into glucose and fructose? Yes, perfect, that is invertase. Invertase रो काम होची कोन ना सुक्रोज. सुक्रोज गोटे मोनोसैकेराइड ना डाइसैकेराइड ना पॉलीसैकेराइड? हु कैन से सुक्रोज इज ए मोनोसैकेराइड ना डाइसैकेराइड ना पॉलीसैकेराइड? सुक्रोज को इन्वर्टेज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रे कन्वर्ट करबो. सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड. परफेक्ट, काहेकि ना दीटा सुक्रोज भांगिले ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सो दैट इट वाज ए डाइसैकेराइड. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माल्टेज? हु कैन से आंसर टा होची इन्वर्टेज. इन्वर्टेज इज आंसर. तो हु कैन से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माल्टेज? माल्टेज रो फंक्शन कोन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ maltase? As you know that the name is maltase, obviously maltase माने अछि माने तो कोन करियो maltose को ब्रेक डाउन करिवो. maltose कोन? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 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 maltose. गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग जी जी. तो मुझे पचारे कि गुड मॉर्निंग तो कहबो जी जी. दैट मींस ग्लूकोज टा होची maltose, जी जी माने ग्लूकोज ग्लूकोज maltose. Then what is the function of lactase? lactase रो काम कोन? lactase का को ब्रेक डाउन करिवो. yes perfect राजलक्ष्मी. what is the function of lactase? lactase रो काम कोन? lactase रो काम होची that is lactose को ब्रेक डाउन करिवो. okay, ग्लूकोज प्लस galactose. ग्लूकोज galactose lactose. परफेक्ट, क्लियर अछि समस्तिकर. ओके, तो मन रखिबो इन्वर्टरेज रो काम होची सुक्रोज को ब्रेक डाउन करिवो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रे. एंड सुक्रोज हो माल्टोज हो लैक्टोज हो एमन सब डाइसैकेराइड जेहेतु दीटा मोनोसैकेराइड को मिसी के माने फॉर्म होई छथि. सो लैक्टेज रो काम होची कोन ना इट विल ब्रेक डाउन द लैक्टोज टू कन्वर्ट ग्लूकोज एंड galactose. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ maltase is which will break down the maltose to convert the maltose into glucose and glucose. Glucose glucose maltose, glucose galactose lactose and glucose fructose sucrose. Okay, then what is the function of hexokinase? hexokinase रो काम कोन? that is glycolysis रो गोटे स्टेप अछि मन अछि ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बा ग्लूकोज रो 6 नंबर पोजीशन रे गोटे फॉस्फेट ग्रुप लागिवो जोतरे कि एटीपी ब्रेक डाउन होई कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दबो. as you know that एटीपी टे कुआ जाय एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बा जो फॉस्फेट रो तीनटा ग्रुप अछि तो फॉस्फेट टा ब्रेक डाउन हेले ही एटीपी दैट इज एनर्जी प्रोवाइड करे. तो एटीपी ब्रेक डाउन होई कि एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो दबो तो सेते बेले गोटे एंजाइम रेस्पोंसिबल है दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज.
तो ग्लाइकोलिसिस रो ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो स्टेप रहला फर्स्ट स्टेप ए स्टेप रे ही बेसिकली एंजाइम hexokinase is responsible. तो क्लियर एंड ग्लाइकोलिसिस रो स्टेप रे ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे एटीपी रा यूटिलाइज हुए काहे ना एटीपी ब्रेकडाउन हेले ही बा एटीपी रो तीनटा फॉस्फेट ग्रुप रु गोटे फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हेले ही एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करियो. इट इज ए प्राइमिंग फेज. यस परफेक्ट कार्तिक. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. Glucose to glucose 6 phosphate occurs due to the enzyme of same question. Glucose to glucose 6 phosphate occurs due to the enzyme. Obviously that is hexokinase. The enzyme which convert the sucrose into glucose to fructose. ये question हम कर ले आई थी. Sorry question repeat हीजी. Common to all living organism. Which one is common to all living organism? सबू लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोटा कॉमन ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो कौन आंसर? यस दैट इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबू लिविंग ऑर्गेनिज्म रे कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रेब साइकिल ईएमपी पाथवे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पचारछि तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म माने से ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब से एनारोबिक भी हेई पारे एंड आल्सो एरोबिक भी हेई पारे. बट एनारोबिक जो माने करंती से मानकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हबोनी ना. सो दैट हमर कोन हबो द आंसर होची ईएमपी पाथवे. ग्लाइकोलिसिस ता ही समस्त को पई कॉमन हेई परिबो. ल ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट. यस anaerobic and aerobic that is हमें कहि परियानी कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाही ईएमपी पाथवेटा कॉमन बोली हैला. तापर मते को कि क्रेब साइकिल रो को स्टेप रे बेसिकली हमर जीटीपी रिलीज हुए. जीटीपी ऑक्सैल एसिटिक एसिड. देखो ट्रिक मन रखे पे क्रेब साइकिल समोसा काटो. समोसा माने सिंगेड़ा स मो सा काटो. समोसा काटो. के फॉर होची अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहवा जहाँ ग्लूटारिक एसिड कहया से सक्सिनेट बा सक्सिनिक एसिड कहे से मालेट बा मालिक एसिड कहे से ऑक्सैल एसिटेट बा ऑक्सैल एसिटिक एसिड कहे से साइट्रेट बा साइट्रिक एसिड कहे से. ताले को एसिटाइल को एंजाइम दीटा कार्बन प्लस ऑक्सैल एसिटिक एसिड 4 कार्बन मिसी गले 6 टा कार्बन. देन एटी गोटे कार्बन. देखो मन रखिबो मु कोन कहले आग लिखिबो समोसा काटो छुरी. समोसा काटो छुरी रे काटिबो. एटा काटो माने देटी छुरी. तो छुरी रे काटिबो माने छुरी रो दी पटे दाढ अछि. एपटे गोटे एनएडीएच छुरी रो एपटे दाढ रो रिलीज होबो एनएडीएच एच प्लस एंड छुरी रो एपटे दाढ रो रिलीज होबो एनएडीएच एच प्लस एंड छुरी रो एपटे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड छुरी रो एपटे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड. छुरी रो दी पटे दाढ अछि ना काटो एंड सक्सिनेट रो मझी रे गोटे अछि सक्सिनाइल कोएंजाइम. सक्सिनाइल कोएंजाइम. ये तो सक्सिनाइल कोएंजाइम रु सक्सिनिक एसिड भितरे जीटीपी रिलीज हो. क्लियर. एंड सक्सिनिक एसिड रु मालिक भितरे फ्यूमारिक एसिड. क्लियर. ओके सक्सिनाइल टू सक्सिनेट. मते को कि जनरली एफएडीएस टू को स्टेप रे रिलीज हो. एफएडीएस टू रिलीज विल व्हिच स्टेप? एफएडीएस टू yes both step 3 and 4 decarboxylation occur by loss of carbon dioxide will occur in citrate to alpha ketoglyceric acid. Citrate to isocitrate गोटे स्टेप अछि बट जनरली एनसीईआरटी रे केवल citrate रू alpha ketoglyceric acid देछि एंड alpha ketoglyceric acid रू सक्सिनाइल कोएंजाइम. तो दैट इज को स्टेप रे हमर बेसिकली हमर एफएडीएस टू रिलीज हबो. को सक्सिनेट रू फ्यूमरिक एसिड ना फ्यूमरिक एसिड रू मालिक एसिड. सक्सिनिक एसिड रू फ्यूमरिक एसिड ना फ्यूमरिक एसिड रू मालिक एसिड रे को स्टेप रे दैट इज एफएडीएस टू रिलीज हबो. हु कैन से एफएडीएस टू को स्टेप रे रिलीज हबो? सक्सिनेट टू फ्यूमरिक एसिड. क्लियर. मन रखिबो एफएडीएस टू रिलीज हबो सक्सिनिक एसिड रो फ्यूमरिक एसिड. बडे सक्सिनिक एसिड रो फ्यूमरिक एसिड भितरे एफएडीएस टू.
देन आउ गोटे एनएडीएच टा कोड रिलीज हबो हु कैन से तीनटा स्टेप रे हमर क्रेब साइकिल रे एनएडीएच H+ रिलीज हबो मालिक एसिड रु ऑक्सैलिक एसिड NADH H+ NADH H+ ये गोटे स्टेप एठी गोटे स्टेप एठी गोटे स्टेप तो क्रेब साइकिल रो तीनटा जगह रे NADH H+ रिलीज हबो गोटे जगह रे FADH2 रिलीज हबो गोटे जगह रे GTP रिलीज हबो क्लियर ले तो समोसा काटो अनुसार से अनुसार क्लियर ओके दैट इज ये हला तमरो क्रेब साइकिल विषय मन रखिबो चलो मालेट एंजाइम नेक्स्ट चलो one molecule of glucose on glycolysis produce गोटे molecule of glucose glycolysis रे कोन प्रोडक्शन दबो one molecules of glucose in glycolysis produce two molecule of pyruvic acid one molecule of pyruvic acid two molecule of CO2 two molecule of oxygen yes r prushti kartik perfect two molecule of pyruvic acid glucose to pyruvic acid two molecule of pyruvic acid आमे जो देखिबा ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एटीपी केते नेट गेन एटीपी ग्लाइकोलिसिस रे केते दीटा ना चारटा ना नॉन ग्लाइकोलिसिस रे ओनली ग्लाइकोलिसिस को हम पचारची ओनली ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एटीपी केतेटा ओनली ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एटीपी केतेटा बा ग्लाइकोलिसिस रे जो NADH+ रिलीज होची ताकू तमे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे पार्टिसिपेट न करी कि केवल ग्लाइकोलिसिस रे रॉ नेट गेन एटीपी केतेटा रॉ नेट गेन एटीपी दैट इज 2 रॉ नेट गेन एटीपी होची 2 दीटा नेट गेन एटीपी टोटल होची चारटा बट जदी NADH+ आमे जो देखिबा ग्लाइकोलिसिस रो प्रोडक्ट कोन 2 पायरुविक एसिड 2 NADH+ एंड 2 ATP नेट गेन ताले टोटल जदी एटीपी देखिबा हमें 2 NADH+ आमे जानि गोटे NADH+ रु 3टा एटीपी सो दीटा रु 6टा ये दीटा 8टा तो टोटल होची 8टा हला नेट गेन होची जे देखिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे ग्लाइकोलिसिस रो प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कला पर नेट गेन एटीपी 8टा एंड टोटल 10टा तो सबोले पई क्वेश्चन देखिबो ग्रॉस एटीपी 8टा यस कहि परियो ग्रॉस एटीपी 8टा बट जेतोळे हम देखिबा टोटल एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे पार्टिसिपेट कला पर टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस रो केतरा 10टा बट जदी पचराबो ओनली ग्लाइकोलिसिस नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे पार्टिसिपेट न करी कि रॉ एटीपी केतटा तो रॉ नेट गेन एटीपी होची 2टा चलो नेक्स्ट ओके एट तुम क्वेश्चन सरुची बट आकु नै कि हम आउ 2-3टा खंड क्वेश्चन करबा एनिमल किंगडम रो तुम 10टा खंड क्वेश्चन पचारियो मते को फर्स्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम रो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए शो करिवो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा किए पोरीफेरा सिलेंटेरेटा टेनोफोरा हु कैन से cellular level of organization which phylum will show cellular level of organization perfect porifera then mate ko ki cycon spongilla these are the example of which phylum cycon spongilla these are the example of cycon and spongilla these are the examples of porifera perfect ostia are present in which phylum ostia ta ko phylum re present hai ostia present in porifera perfect hydra is an example of which phylum hydra ta ko phylum er example hydra is an example of hydra ta ko phylum er example hydra yes that is Coelenterata ओके अच्छा मते को कि स्केलेटन ऑफ पोरीफेरा कोलार सेल ना दैट इज हमर कहबा obviously that is the skeleton of porifera is one side or collar cell next question को
radial symmetry, radial symmetry किए शो करिवो सिलेंटरेटा टेनोफोरा प्लाटिहेलमिथेस आस्किहेलमिथेस को फाइलम टा दैट इज radial symmetry शो करिवो आको भितरो radial symmetry किए शो करिवे कोआनोसाइट और कोलार सेल आर द skeleton of porifera yes अर्पिता ठीक अछि कार्तिक लोपामुद्रा मानश्री yes you have to remember radial symmetry किए शो करिवे सिलेंटरेटा एंड टेनोफोरा RCC radial symmetry सिलेंटरेटा एंड टेनोफोरा तापर मते को कि को फाइलम bilateral symmetry without body cavity, bilateral symmetry without body cavity option platyhelminthes, aschelminthes, annelida, arthropoda which phylum will show bilateral symmetry and without body cavity by acoelomates yes perfect bilateral symmetry without body cavity bilateral symmetry किए platyhelminthes यदि क्वेश्चन पचारिबो bilateral symmetry with false body cavity कहार हबो bilateral symmetry without body cavity होचे platyhelminthes and bilateral symmetry with false body cavity किए bilateral symmetry with false body cavity who can say bilateral symmetry with a false body cavity होची that is aschelminthes perfect aschelminthes perfect open circulatory system option दोची open circulatory system mollusca annelida arthropoda na that is chordata which phylum will show that is open circulatory system open circulatory system will show which phylum open circulatory show open circulatory system होची mollusca and arthropoda omago turulov mollusca and arthropoda oma open circulatory mollusca arthropoda clear mollusca and arthropoda arthropoda annelida mollusca arthropoda होची open circulatory system closed circulatory system होची close होची annelida and chordata annelida chordata होची closed open circulatory system होची mollusca arthropoda okay next देखिबा flame cell कहार excretory organ flame cell कहार excretory organ flame cell is an excretory organ of chordata annelida होची that is closed circulatory system mollusca arthropoda होची open circulatory system flame cell टा कहार excretory organ yes answer is platyhelminthes perfect dorso ventral flattened body कहार बा फ्लैटोम कहा को जाय dorso ventral flattened body बा फ्लैट आर्म कहा को जाय फ्लैट आर्म होची platyhelminthes perfect dorso ventral flattened body बा फ्लैट आर्म होची that is हमर रहले platyhelminthes next को that is nephridia कहार excretory organ nephridia कहार excretory organ nephridia is an excretory organ of yes Karthik annelids annelida रिंग वर्म कहा को जाय को फाइलम को रिंग वर्म को जाय रिंग वर्म को फाइलम रिंग वर्म को yes that is annelida को रिंग वर्म perfect the ring worm होची annelida next तापर मते को कि जनरली malpighian tubule को फाइलम रो excretory organ annelids arthropoda mollusca echinodermata को फाइलम रो excretory organ that is malpighian tubule yes arthropoda perfect next question को that is को फाइलम शो करे both radial symmetry as well as bilateral symmetry which phylum will show both type of symmetry radial as well as bilateral कि radial symmetry and bilateral symmetry show करियो both type रो symmetry को phylum show करियो
which phylum will show both type of symmetry? Yes, that is echinodermata. Perfect. Echinodermata strictly मन रखिबो echinodermata रो larva टा कोन शो करिवो and adult टा कोन शो करिवो larva टा शो करिवो that is bilateral symmetry and adult टा शो करिवो radial symmetry. Adult will show radial symmetry. Yes, Karthik, perfect. And bilateral symmetry which will show adult. Perfect. R Prushti, Ankita, Rajalakshmi, Ankita Priyasini, Arpita. Perfect. चलो बढ़िया नेक्स्ट वॉइस स्पीड होन तो तुमको माने माने कि स्पीड वॉइस हे जाउन तो तमे क्वेश्चन करिया पूर्व आ अगेन क्वेश्चन को हम रिपीट कर दोने तो ठीक ठाक अछि बस ठीक खाली कंफर्म करो यस ओके ठीक अछि चलो देखो अरे हमें प्रैक्टिस तो ये बड़ा ही करिया दरकार तापरे जदि हमें देखिबा दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क. Great white shark, it is an example of which phylum? Great white shark को phylum रे example? Great white shark टा को phylum रे example? चंदन साईराम. Great white shark Chondrichthyes. Okay, Chondrichthyes. Then हमें जो देखिबा that is Petromyzon lamprey, Petromyzon lamprey and Myzin hagfish. Petromyzon lamprey and Myzin hagfish को phylum रे example? Petromyzon lamprey and Myzin hagfish. That is cyclostomata. Perfect. Cyclostomata বা sucking and circular mouth হলে cyclostomata. Then birds and mammals. Poicothom না homeotherm? Poicothom না homeotherm বা that is body temperature को regulate करि परिबे homeotherm ना cold blooded body temperature को regulate करि परिबेनी. Birds and mammals. Yes, perfect. Birds and mammals होजि homeotherm. और reptiles माने कोन हबे poicothom. Yes, homeotherm होछि birds and mammals होजि homeotherm. Perfect. Perfect. Next that is हमें जो देखिबा next question digestive system complete को फाइलम रो digestive system टा complete को फाइलम रो platyhelminthes aschelminthes annelida arthropoda को फाइलम रो that is digestive system is complete digestive system complete को फाइलम रो aschelminthes perfectly मन रखिबो digestive system complete होची aschelminthes रो राउंड वर्म कहा को एटा एटा जोड़ो राउंड वर्म रिंग वर्म स्पाइनी बॉडी पेयर्ड लेग्स स्टोमोकॉड ऑप्शन रे दैट इज राउंड वर्म के राउंड वर्म होची आस्केल्मिथेस देन रिंग वर्म के आस्केल्मिथेस राउंड वर्म रिंग वर्म होची दैट इज एनिलिड्स एनिलिडा को कहे रिंग वर्म स्पाइनी बॉडी कहार स्पाइनी बॉडी दैट इज एकाइनोडोमाटा पेयर्ड लेग्स कहार आर्थ्रोपोडा स्टोमोकॉड कहार स्टोमोकॉड कहार एकाइनोडोमाटा हेमिकॉडाटा ना कॉडाटा स्टोमोकॉड कहार देखा जिवो इंस्टेड ऑफ नोटोकॉड a notochord like structure called as stomochords present in which phylum stomochord kahar dekha jibo yes that is stomochord ta dekha jibo hemicodata perfect मन रखला okay next jiba सोइला ओके तो तुमको एटा लास्ट पांचटा क्वेश्चन
G1 is G2 को फेज रे दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन हुए डीएनए रेप्लिकेशन by DNA duplication takes place in which phase G1 is G2 कमेंट ऑन करो कमेंट G1 is G2 yes that is S phase रे A space S1 phase बोल नो A space एटा कॉमा मु दउतली तो S1 बेले देखा गला तो A space रे DNA duplication हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोटे क्रोमोजोम रे जेतेबेले हमर दैट इज सेंट्रोमियर टा लोकेटेड इन द सेंटर दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक ना सबमेटासेंट्रिक ना acrocentric ना टेलोसेंट्रिक when the when the that is centromere is located at the middle position that is called as metacentric okay and जेतेबेले क्रोमोजोम रो सेंट्रोमियर इज लोकेटेड जस्ट away from the center थारो जस्ट टिके away हेले कोन हबो सबमेटासेंट्रिक ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज बैक्टीरिया रो मूवमेंट पई की हेल्पफुल फिम्ब्रियाई ना फ्लाजेला ना फिम्ब्रियाई व्हिच वन इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया रो मूवमेंट पई कोटा रिस्पांसिबल बैक्टीरिया रो मूवमेंट पई फिम्ब्रियाई ना फ्लाजेला व्हिच वन इज दैट इज फ्लाजेला then bacteria को rock रे attachment पई which one is responsible for the attachment of bacteria in the rock flagella na fimbriae that is fimbriae yes fimbriae is important then what is the function of cilia in your trachea what is the function of cilia in your trachea what is the function of cilia in the flagella cilia in the trachea it will prevent the entry of dust particle towards the lungs then last question combine that is the finger like projection in the alimentary canal which is important for the absorption of food is called as the finger like projection in the alimentary canal which is important for the absorption of foods prevent the dust particle ठीक अछि that is last question को the finger like projection present in your alimentary canal which is important for the absorption of food is called as villi perfect and it last question glucose absorbed in the active process or by the passive process in alimentary canal glucose will absorb in the active or passive in the alimentary canal yes that is active process okay सरला तुमरो क्लास देन एना पेडागोजी क्लास सब सत्य सारंगर आई होप तुम सब थाओ एना इमीडिएटली स्टार्ट होची 1 मिनिट रे